人口。Population, that's so high. Right.
9日、丸い6つ、上7日下、1つ16、あげる、力、
it's a great course, and from Python dictionary, and now we can print all of that out. However, you're going to see if I print this with a print statement, so let's try this here. If I print the response, then we get kind of this garbage in the terminal that's just impossible to read. So instead of printing it using a regular print statement, we're going to use a pretty printer. Really cool thing if you haven't seen this. So to do this, we're going to say printer. So just do a whole number, because this is going to give me the displacement in seconds, or the difference in seconds. Okay, so let's run this now, and let's see what we get. And now notice that the velocity is all good, and so is the time. Perfect, there you go. Okay, so that's all we need for those stats. Okay, so we have the velocity, we have the time, we have the level showing up. What I need to do is make it so that my computer gets faster every time I beat a level. So what we need to do is go inside of our computer car here, and we need to write a method that's going to allow it to update its speed based on the current level. So I'm just going to say define next underscore level, and what we will do is say self. Now when we go to the next level, what we need to do is reset this car. Now we could manually call reset outside, but the first thing we'll do is say self.reset. Like that, so that this is going to go to its start position, its velocity is going to get updated, all of that. However, after we reset the car, we then need to change its velocity based on the level. So I'm just going to say level inside of here. So we're going to reset the car. And we're going to say self.vel is equal to, and then we'll go with whatever the self.maxvel is that was passed, plus, and then this is going to be level minus 1 multiplied by 0. 0.2. Now 0.2 is how much I want to increase the speed of this car every level. We could put this in a variable. I'm just going to hard code it in for right now. You also could change this and make it something like 0.5. The one thing to keep in mind is you do not want this car to ever be faster than the player car. If it's faster than the player car, there's no way the player will win. It's just impossible, because this car will take, assuming you did a good path, the best possible line around the track, and so there's no way the human's going to be able to beat it, especially because it doesn't have to worry about acceleration. It just starts at the maximum speed. So you need to make sure that whatever your increment here is, that multiplied by the number of levels that you have plus the maximum velocity you start with is not greater than the player's speed. You could make it the same, but even if you make it the same, then the player still can't win. So this is fine. I'm saying level minus 1, which means on the very last level, I will have 9 multiplied by 0.2, so 1.8. So the speed will be 3.8, so it'll be 0.2 slower than the player. Hopefully that is good. Let me just make sure that that all makes sense. Yes, and then the last thing we need to do is say self.currentPoint is equal to 0, although that should really go inside of the reset method. So where is equal to 0, and then the last thing we need to do is say self.currentPoint is equal to 0, although that should really go inside of the reset method. So where is reset? Reset was in the abstract class. Okay, so we can leave self.currentPoint here. All right, that should be good. Now we just need to see where we should call next level. So what I'm going to do now is go to my handle collision. Handle collision now needs to take game info as well. And so when we call handle collision, we need to pass game info. And now we're going to start kind of working on what happens when the computer wins or when the player wins. So if the computer finishes, we are going to reset the player car, reset the computer car. That looks fine.
Okay, and now we go here to when the player finishes. Well, if the player finishes, then rather than computer car.reset, we're just going to say computer car.next level, and we're going to pass game info dot level. But first, we're going to say game info dot and then next level like that. So we're going to increment the next level for game info if the player has won. We're going to reset the player car, and then this will reset the computer car and change its speed for the next level. So that should be good. Now, by doing this, it means that this will automatically trigger for the next level because the game will now not have been started. We'll be waiting for the next level to be started. Okay, that's fine. The only thing we need to handle now is if the computer wins. So if the computer wins, we need to put some message on the screen saying, hey, you know, you lost, whatever, and then we need to reset the game. So we'll actually go game info dot reset. And before we do that, let's just put some text on the screen. So let's say Blit text center, and then this is going to be, what do we want to say here? You lost, exclamation point. And we'll do this on the window, and we'll pass the main font. Okay, then we need to manually Hello? बरं पाठवतो कोणत्या पेपरला आहे
this is going to be capital win like that. We need to manually delay the game. The reason we need to delay is so that we have time to see this text, because what's going to happen is we're going to show you lost. We're going to delay for however many seconds you want. I'm going to go with 5 seconds. And then as soon as that delay is done, it's going to automatically restart the game for us. So I'm going to say hi game. Dot time and then dot wait, and you put milliseconds in here, so 5,000 milliseconds is 5 seconds, so we're gonna do that. Okay, that should be good. The only other thing we need to handle is what happens if the player wins the game. Good. The only other thing we need to handle is what happens if the player wins the game, but we're going to do that here. So after we move the player, and after we move the computer, and after we handle the collision, then we're going to say if the game info dot game finished, we want to do a very similar thing to what we just did here. We want to reset all of this stuff, so we'll do that, and we want to blit text, you won the game. Like that. Okay, so that's actually all we need. Now I'm going to get rid of this print statement, and I believe that we have just finished the game. Now I'm going to get rid of this print statement, and I believe that we have just finished the game. Now, obviously I'm not that confident because we have not tested it right now, but scrolling through, everything looks good, and I think we've just handled everything that we needed to. And I'm also realizing how much code we have here. So again, a massive props to you guys if you stuck around, because this is a lot of code to digest over video. All right, let's run the file, and let's see if we can win a level here. Okay, let's press any key to start. And never mind, I remember that the guy, my computer, did I start him at a speed of 2 or did I start him at a higher speed? Let's see what speed he's at. Yeah, it's at 4. Okay, so I need to put my computer car speed to 2, otherwise I'm going to have no chance here. Okay, so let's run the code, and let's see. That's better, okay. So now, let's try to get a win here, and we'll see if the levels are working. Okay, look at this driving skill. Nice, nice. Alright, almost there. Let's see if we can finish before the computer. I'm hoping so. And there we go. Okay, so level 2. And it says press any key to start level 2. Okay, so let's do level 2. Let's just make sure it goes to level 3. And then I will kind of fast forward as I get to the final level, and we'll make sure that this actually works if the computer wins and if I win. Okay, but let's just get through level 2 first, though, to ensure that we're going to get on.
the next level. Okay, almost there. I forget what the time was on the last one. I should have kept track of that, then I could have seen if we were going faster this time. Oops, okay, looks like there's an invisible wall there. That's guess that's gonna happen. And let's try to get up here. And okay, press any key to start. Level 3, we're on level 3. So now what I'm gonna do is let the computer win. I'll fast forward through that. Assuming that works, then we'll see and make sure that the game actually ends when we hit level 10. Alright, so here we go, home stretch of the computer. You can see I haven't really moved until now. Let's see what happens when the computer wins, and nothing. Okay, so that's actually a good thing to run into, because, oh, it says press any key to start level 1. So I guess it lags for a second. Okay, let's see what the problem was here. I'm guessing the problem has... Okay, this makes sense. So what happened was we delayed for 5,000 seconds, or 5,000 milliseconds, so 5 seconds, but we forgot to update the display to actually show this message. So I have to say pygame.display.update, and now... So vediamo, lascia peccare.
और गंदी वीडियो जैसी कई हराम चीजों की रील्स शेयर करते हैं। एक दफा सोच कर देखें, आप कब्र में लेटे हुए और फरिश्ते ने आकर कहा, आपके गुनाह 998 हैं और नेकियां 999। एक नेकी के ज्यादा होने के कारण आपके हक में जन्नत का फैसला हुआ है। उसके दूसरे ही पल फरिश्ते ने आकर कहा, आपके गुनाह 1000 हो गए हैं, जबकि नेकियां 999 ही हैं। सिर्फ एक गुनाह के ज्यादा होने के कारण आपको अब जहन्नम में ले जाया जाएगा। तब आप सोचने लग जाओगे, मैं तो कब्र में हूँ, अब गुनाह नहीं कर सकता, तो गुनाह कहाँ से आ रहे हैं? तब वही फरिश्ता आपको बताएगा, जब जिंदा थे लोगों को हराम वीडियो शेयर करते थे, सॉन्ग्स की, म्यूजिक की वीडियो अपलोड करते थे, अभी देख रहे हैं और गुनाह कर रहे हैं।
मेरी कहानी यहाँ पे फैसला
आओ लेके चलूं तुमको बचपन की उन गलियों में जहाँ रंग है यार है फुर्सत है शायद कहीं इसमें तुमको तुम मिलो चलो कहूँ तुमसे मैं मेरी कहानी झूला झुलाए ये पनघट नदिया किनारे ये आंगन निंदिया तू आना हवा के संग मुझको भी तू दिखाना अपने रंग सुनो मेरे दिल जानी ये कहानी मानी एक दिन मेरे संग ये जहां था मेरा कुछ और तेरा भी अरमा जाने दिल में क्या कुछ ये बसा था ये मेरी है कहानी ये मेरी कहानी झूला झुलाए ये पनघट नदिया किनारे ये आंगन निंदिया तू आना हवा के संग मुझको भी तू दिखाना अपने रंग तेरा मेरा गलियों में यूं फिरना फिर तेरा तो कोई तकना तक के नानी की गोदी में सोना परियों के देश जाके नहाना ये मेरी है कहानी ये मेरी कहानी कोई फिक्र थी न कोई बहाना मुट्ठी में था जैसे जमाना कच्ची जुबां में वो गीत गाना नए खिलौने सबको दिखाना मांग लिया जिंदगी से ज्यादा चिन गया वो जिसने किया वादा कौन लाए वो पल जो सुहाने बीते थे जो वो गुजरे जमाने ये मेरी है कहानी ये मेरी है कहानी आओ लेके चलूं तुमको बचपन की उन गलियों में जहाँ रंग है यार है How this will work. I'm not going to test it. I know that this will work now, and everything will be good because it did actually reset back to level 1. So with that,
I believe everything should be working. I'm not actually going to go through and test the fact that the player wins. Hello everybody and welcome to a brand new tutorial series where we're going to be building the checkers game in Python with Pygame. Now if you don't know Pygame, that's totally fine. It's a module in Python that lets us build 2D games. What I'll be doing in the series is walking you through everything that we need to do to build a full-fledged checkers game. Now I'm actually quite excited about this because this is going to be leading me up to another series I'm going to be doing, which is talking about the Minimax algorithm to actually make an AI that we can play checkers against. So let me give you kind of a demo of what this should look like. I've already built the game out and I will be not necessarily copying from my other screen, but just having it up as a reference to make sure I don't get too lost. But you can see this is kind of the game of checkers. The human player is red and then the other player obviously is white, and you can see that we have an AI, so the AI will automatically move based on the move that you do. So let's see if I leave myself open here. The AI, decided actually not to capture me because I would capture it back. And if we play this for a few minutes, I won't go through all of it, you'll notice that the AI is actually pretty decent, and it actually can play. Hello everybody and welcome to a brand new tutorial series on creating an AI for the game checkers thing in the world. Hello everybody and welcome to another YouTube video. In today's video, I'm going to be showing you how to make the famous game Pong in Python. Now, this is a great project for beginner or intermediate programmers. We are going to be using a module called Pygame to accomplish this. However, you do not need to know Pygame, and the features we're going to use from it are very limited. A lot of what we need to code out is the logic related to moving the ball around the screen, having it bounce off the different paddles, implementing score, all of that type of stuff, and you're going to learn a lot in this project if you are not, say, an expert Python programmer already. With that said, let me give you a quick demo, and then we'll actually start writing some code. So in front of me, I actually have the finished code for this project. Whenever I do a tutorial, I code it out first, and then I reference that code while I'm teaching it to you guys, and all of the code we write in this video will be available in the description. Anyways, let me just run this here, and then we can have a look at the finished product. Okay, here we go. So this is Pong. We have two paddles. You can move one paddle with W and S, and the other paddle you can move with the arrow keys, and you also would be able to implement this as a single-player game if you wanted to code like an AI for one of the paddles, which would be pretty easy to do. You can see this is kind of the basics. We have an implementation of Pong, and then of course there's scoring at the top, and I've just made it so that when you get to 10, then the game is over. Video here. Hello everybody, and welcome to another Python tutorial where I'll be showing you how to build the game of 2048 in Python. Now, this game was one of my favorite games as a kid, and it's actually very interesting to code out. I won't lie to you, it is a little bit complex, but I think that's what will actually make a great video. I'll teach you some more advanced Python techniques and how you can actually structure a game like this. So we'll go through all of the steps, coding out the grid, combining the tiles, etc. And by the end of this video, you'll have a fully finished game and you will have learned quite a few Python features. In this video, I'll be sharing with you how to build a platformer game in Python. This game will have pixel-perfect collision, it will have an animated character, as you can see here, it will have single and double jumping, it will have all kinds of different animations for falling, jumping, colliding with obstacles. For example, you can see here when I hit the fire, I kind of go into this hit state. I will show you how to generate different objects, how to scroll the background, and really at the end of this video, you will have a solid fundamental understanding of how to build a platformer game in Python, and you can go and extend this and build really anything that you can think of. I will even include a ton of free assets for you that allow you to change your character, change the terrain, change the background, and do all of that extremely easily. In fact, in this tutorial alone, I will show you how to use 4 different characters. Let me show you those characters before we continue. So this is the second character here. This is being referred to as Mask Dude. This is the third character. I'm calling this guy the Ninja Frog, as you can see. And finally, we have this character here, which is called Pinkman. Now, in this tutorial, you will learn how to use all of these characters, and you can swap them out with a single line of code. With that said, I hope you're excited. This video has taken a very long time to prepare, so please click the like button. All right, so let's go ahead and get into it. Now, since this is a long video... First roll with Jarvis, then आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक AI डेस्कटॉप असिस्टेंट बनाकर दिखाने वाला हूँ। AI एंड मशीन लर्निंग काफी बूम पर है। चैट जीपीटी आया, OpenAI ने इतने बड़े-बड़े प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सबसे पहले एक ह्यूमन से इंटरैक्ट करने वाला डेस्कटॉप असिस्टेंट कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि OpenAI की API को इस्तेमाल करके, जो कि चैट जीपीटी को भी पावर करता है, उस API को इस्तेमाल करके कैसे आप अपने डेस्कटॉप असिस्टेंट से वो सारी चीजें करवा सकते हो जो कि शायद आप खुद स्क्रैच से कोड करने बैठो तो आप लोगों को एजेस लग जाए। ये वीडियो एप्लीकेशन ऑफ AI को पाइथन के थ्रू बहुत अच्छी तरह से डेमोंस्ट्रेट करेगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला काम जो मैं अभी करने वाला हूँ वो है पाइचार्म को डाउनलोड करना। आप लोग डिस्क्रिप्शन में अगर एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग पाइचार्म के कम्युनिटी वर्जन पर पहुंच जाएंगे। अगर आप लोग पाइथन में सीरियस डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को पाइचार्म रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही एडवांस आईडी है और इसके फीचर्स जो कि आगे हम इस वीडियो में भी देखने वाले हैं वो काफी कमाल के हैं और आप लोगों को इस प्रोजेक्ट को बनाने में काफी हेल्प करेंगे। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, आप लोग कम्युनिटी वर्जन को डाउनलोड करना, जिससे कि आप लोग एब्सोल्युटली फ्री पाइचार्म के फीचर्स को यूज कर सको। लेकिन अगर आप लोग प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना चाहते हो पाइचार्म की मदद से तो आप पाइचार्म प्रोफेशनल भी यूज कर सकते हो। पाइचार्म प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल डेवलपर के लिए आईडी है, यानी कि आप लोग इसके एडवांस फीचर जैसे कि जेंगो का सपोर्ट हो गया, रिमोट सर्वर से आप लोग कनेक्ट करना चाहते हो उस तरह के काम हो गए, फिर फ्लास्क का सपोर्ट और भी एडवांस चीज जैसे कि डेटा साइंस, जुपिटर नोटबुक्स, इन सब चीजों के लिए चुन के फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। मैं पर्सनली इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। अब अगर मैं प्राइसिंग की भी बात करूं तो दिस इज डेफिनेटली वर्थ इट। अगर आप मंथली बिलिंग पे जाते हो तो आपको 9.9 USD जो कि अराउंड 800 रुपए के हो जाता है। अगर आप लोग प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इज वर्थ इट। अब इनकी एक चीज जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि पहले साल में अगर आप लोग पूरे साल के लिए पाइचार्म खरीदते हो तो $99 का है। फिर उसके बाद जब आप सेकंड ईयर पे आते हो तो $79 ही पे करने पड़ते हैं आपको। फिर उसके बाद तीसरे साल में जब आप पहुंच जाते हो तो सिर्फ $59 और उसके बाद $59 ही आप लोगों को पे करने पड़ते हैं, व्हिच इज अमेजिंग यार। अगर आप लोग प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो पाइचार्म को यूज करके, अपने क्लाइंट्स को सर्व करके, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के, तो डेफिनेटली दिस इज वर्थ इट। आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। और भी आप इस पेज पर आके कुछ
डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अभी मैं पाइचाम कम्युनिटी जल्दी से इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर में। मेरे कंप्यूटर में इनफैक्ट पाइचाम कम्युनिटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, क्योंकि मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोग मैक ओएस यूज कर रहे हो, सिंपली आप लोग इसको पकड़कर ड्रैग कर देना और पाइचाम कम्युनिटी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। सो गाइस, अगर आप लोग JetBrains टूलबॉक्स को डाउनलोड करते हो तो आप लोगों को काफी फायदे मिलते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करें, चाहे आप विंडोज में हो या मैक में, आप टूलबॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। 3 सेकंड में खुलने वाला है, तो वेट करता हूँ इसका मैं, और ये फिर इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो DMG फाइल यहाँ पर खुल गई है, तो इसको डबल क्लिक करूंगा मैं खोलने के लिए, और इसको खोलने के बाद सिंपली मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इसको मैं ड्रैग करूंगा एप्लीकेशंस में और ये इंस्टॉल हो जाएगी। और इसके बाद सिंपली मैं अपनी एप्लीकेशंस में आकर टूलबॉक्स को खोल सकता हूँ। तो मैं JetBrains का टूलबॉक्स ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया टूलबॉक्स, कहाँ हो हम, यहाँ एप्लीकेशंस वाले फोल्डर में इसको ढूंढेंगे। टूलबॉक्स, JetBrains टूलबॉक्स, हाँ ये रहा। और इसको मैं खोलूंगा, और फर्स्ट टाइम भी आप लोग पाइचाम को टूलबॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हो। इससे होगा ये कि आप एक मल्टीपल ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो JetBrains की टूलबॉक्स की सहायता से। उसी के साथ साथ आप लोग JetBrains टूलबॉक्स का अगर इस्तेमाल करते हो तो मल्टीपल वर्जन्स मेंटेन कर सकते हो आप लोग एक ही एप्लीकेशन के। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर वर्जन पसंद आ जाता है और मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा लाइसेंस एग्रीमेंट को, और इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा कि गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूँगा, और इसके बाद मैं यहाँ पर अपने पसंद की ऐप को जो है डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, तो पाइचाम कम्युनिटी एडिशन ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है। मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर में, उसी के साथ साथ IntelliJ और ये सारी ऐप्स में इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैं जो टूलबॉक्स है इससे पाइचाम प्रोफेशनल भी डाउनलोड कर सकता हूँ, जिसमें कि जावास्क्रिप्ट का बहुत अच्छा सपोर्ट है, एंगुलर का सपोर्ट है, रिएक्ट का सपोर्ट है, जेंगो वगैरह बहुत बढ़िया प्रोफेशनल आईडी है, तो इसको आप लोग यूज कर सकते हो कुछ इस तरह से। अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो मैं इसको बंद करूंगा, जल्दी से भी पाइचाम CE अपने कंप्यूटर में फायर करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, पाइचाम CE मैंने अपने कंप्यूटर में फायर कर लिया है। मैं नया प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ पाइचाम में। सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हम लोग इस प्रोजेक्ट का नाम रखने वाले हैं Jarvis AI। ठीक है, तो Jarvis AI के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया। अभी ऑटोमेटिकली मुझे बता रहा है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने को, तो मैं यहाँ पर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली बना सकता हूँ। अगर आप अगर आप लोग सिस्टम इंटरप्रेटर यूज करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड इंटरप्रेटर पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप यूज करो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को, जिसमें आपके सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज में लिया है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और क्रिएट पर क्लिक करूँगा। थोड़ा टाइम लेता है वर्चुअल एनवायरनमेंट को बनाने में, तो वेट करते हैं इसका, और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट को बना देगा, जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। मैक इज प्रीटी फास्ट, आई एम वेरी अमेज्ड विद हाउ दिस मशीन वर्क्स। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि डाउनलोड प्री बिल्ड शेयर्ड इंडिसेस, तो मैं इसको भी ऑलवेज डाउनलोड कर देता हूँ, यहाँ परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ठीक है, वेट करूँगा और मैं ये पूरा का पूरा मिटा दूँगा। यहाँ पर एक मेन डॉट पी नाम से फाइल बनी हुई है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब आप लोग चाहो तो इतना पोर्शन रख सकते हो, इफ नेम इक्वल्स टू मेन, ये रख सकते हो आप चाहो तो, बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं सिंपली मिनिमल रखूँ चीज़ें, और ये चीज़ आप टाइप भी कर सकते हो। बट अगेन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और अब देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या करने वाले हैं। सो गाइस, अब हम रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल करने वाले हैं, और जो पहला पैकेज मैं आप लोगों को इंस्टॉल करवाने वाला हूँ वो है स्पीच रिकॉग्निशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ टर्मिनल में आ जाएंगे अपने और लिखेंगे पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें स्पीच रिकॉग्निशन करवाने की
उसको हमें पहचानना होगा पाइथन के थ्रू, तो हमने इसलिए स्पीच रिकॉग्निशन का इस्तेमाल किया यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला पैकेज मैं आप लोगों को इंस्टॉल करवाने वाला हूँ वो है विकिपीडिया। तो हम यहाँ पर पिप इंस्टॉल पर, ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला पैकेज मैं आप लोगों को इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें स्पीच रिकॉग्निशन करवाने की जो भी हम क्या करने वाले हैं। सो गाइस, अब हम रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल करने वाले हैं, और जो पहला पैकेज मैं आप लोगों को इंस्टॉल करवाने वाला हूं वो है स्पीच रिकॉग्निशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ टर्मिनल में आ जाएंगे अपने और लिखेंगे पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें स्पीच रिकॉग्निशन करवाने की जो भी हम बोलने वाले हैं उसको हमें पहचानना होगा पाइथन के थ्रू, तो हमने इसलिए स्पीच रिकॉग्निशन का इस्तेमाल किया यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला पैकेज मैं आप लोगों को इंस्टॉल करवाने वाला हूँ वो है विकिपीडिया। तो हम यहाँ पर पिप इंस्टॉल विकिपीडिया करेंगे। ये एक पैकेज है जो कि विकिपीडिया से डेटा लाने में हमको मदद करता है। फिर इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल और ओपन एआई। ओपन एआई भी एक पैकेज है, आप लोग को पता होगा ओपन एआई क्या है अगर नहीं। नहीं पता तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जो ओपन एआई है वो एक एआई कंपनी है, इनके पास GPT-4 है, चैट जीपीटी का भी नाम सुना होगा। ओपन एआई उनका इनकी एक एपीआई है जिसके थ्रू हम ये सारे काम कर सकते हैं और हम करेंगे भी। तो ओपन एआई को हम इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसलिए हमने ओपन एआई को इंस्टॉल किया है। तो मैं जल्दी से आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि हमारा ओपन एआई जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ये सारे पैकेजेस हम डेफिनेटली यूज़ करने के लिए इंपोर्ट भी करेंगे और इंपोर्ट करके यूज़ भी करेंगे। तो मैं जल्दी से इन पैकेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहला पैकेज जो मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ वो कौन सा है? वो है स्पीच रिकॉग्निशन। और चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैं इसको इंपोर्ट करूंगा एज SR। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग पाई ऑडियो को इंस्टॉल करने वाले हैं, और अगर आप लोग पाई ऑडियो को इंस्टॉल करते हो तो एक बार में पाई ऑडियो इंस्टॉल होने में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। विंडोज़ में भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। मैं आप लोग को मैक ओएस का बताता हूँ और विंडोज़ में भी आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग परेशानियों से दूर होकर कर सकते हो इंस्टॉल। पहले मैक ओएस का बता देता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखें एक्सकोड सेलेक्ट
माइनस माइनस इंस्टॉल, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये मुझसे कह रहा है कमांड लाइन टूल आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको शायद करके दे दे इंस्टॉल, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रू रिमूव पोर्ट ऑडियो, ठीक है। ये क्या है ब्रू रिमूव पोर्ट ऑडियो, क्या करेगा ये जो मेरा एक्जिस्टिंग पोर्ट ऑडियो का इंस्टॉलेशन है उसको रिमूव कर देगा। अब आपको मैंने रिमूव क्यों किया, क्योंकि मैं इसको फ्रेशली इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो ब्रू रिमूव के बाद मैं ब्रू इंस्टॉल पोर्ट ऑडियो करने वाला हूँ, ठीक है। किया मैंने, पोर्ट ऑडियो इंस्टॉल होगा और जैसे ही पोर्ट ऑडियो मेरा इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद मैं पाई ऑडियो को इंस्टॉल करूंगा। तो पे इंस्टॉल पाई ऑडियो, ठीक है। पाई ऑडियो इंस्टॉल हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन एज एसआर मैंने किया, तो इसको पाई ऑडियो यूज करना पड़ता है इंटरनली। मैं क्या करूंगा जल्दी से आप लोगों को बताऊंगा पाई ऑडियो विंडोज में कैसे इंस्टॉल करना है। आप यहाँ पर लिखें अनऑफिशियल पाइथन बाइनरी, सिर्फ विंडोज के लिए काम करेगा। और आप यहाँ से क्या करें पाई ऑडियो आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिख जाएगा, और मैं यहाँ पर जल्दी से पाई ऑडियो उप्स कंट्रोल एफ करना था मुझे, पाई ऑडियो में सर्च करूंगा, देखो पाई ऑडियो यहाँ पर आ गया, क्लिक करें आप यहाँ पर। और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो अलग अलग वर्जन पाइथन वर्जन के लिए आपको पाई ऑडियो का व्हील मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपके पास पाइथन 3.11 इंस्टॉल है, तो पाइथन 3.11 के दोनों व्हील्स डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद आप दोनों को एक करके इंस्टॉल करके देख लेना जो भी इंस्टॉल हो जाए। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये डाउनलोड किया व्हील, ये व्हील डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद ये जहाँ भी डाउनलोड हुआ है मैं शो इन फाइंडर करूंगा, यहाँ पर एक टर्मिनल खोल लूंगा जहाँ भी डाउनलोड हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इस फोल्डर के अंदर डाउनलोड हुआ है, इनफैक्ट मेरा ये डाउनलोड्स में डाउनलोड हुआ है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा, इसको मैं न्यू टैब में खोल लेता हूँ डाउनलोड्स फोल्डर को, और जैसे मान लो मेरा ये माई जारविस नाम के फोल्डर में ये मेरा डाउनलोड हो गया मान लो, ठीक है। मैं शिफ्ट राइट क्लिक करूंगा, न्यू टर्मिनल खोलूंगा इस फोल्डर पे, और मैं लिखूंगा pip3 इंस्टॉल, और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा इसके व्हील को इंस्टॉल कर लूंगा, और मैंने py लिख के टैब दबा दिया, एंटर मारूंगा, ये व्हील इंस्टॉल हो जाएगा। ये वाला काम ना करे तो दूसरा वाला जो व्हील है वो आप ट्राई करना, काम कर जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गई चीज आप लोगों को। गाइस अगर आप पाइचाम को विंडोज में डाउनलोड करना चाहते हो तो प्रोसेस एक्जेक्टली सेम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद जिस तरह से मैं इसको लॉन्च कर रहा हूं आप इसको लॉन्च कर लें। सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको डाउनलोड करना है और सेटअप को फायर, तो दूसरा वाला जो व्हील है वो आप ट्राई क्लिक, मैं और डाउनलोड होने के बाद विंडोज के लिए काम करेगा। और आप यहाँ से करना है, आप यहाँ पर लिखें अनऑफिशियल पाइथन बाइनरी, सिर्फ विंडोज के लिए काम करेगा। और आप यहाँ से क्या करें पाई ऑडियो आप लोग को यहाँ पर कहीं दिख जाए, आप लोग को बताऊंगा पाई ऑडियो विंडोज में कैसे इंस्टॉल करना है। आप यहाँ पर लिखें अनऑफिशियल पाइथन बाइनरी, सिर्फ विंडोज के लिए काम करेगा। और आप यहाँ से क्या करें पाई ऑडियो आप लोग को यहाँ पर कहीं दिख जाएगा, और मैं यहाँ पर जल्दी से पाई ऑडियो उप्स कंट्रोल एफ करना था मुझे, पाई ऑडियो में सर्च करूंगा, और ये देखो पाई ऑडियो तो यहाँ पर आ गया, क्लिक करें आप यहाँ पर। और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो अलग अलग वर्जन पाइथन वर्जन के लिए आपको पाई ऑडियो का व्हील मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपके पास पाइथन 3.11 इंस्टॉल है, तो पाइथन 3.11 के दोनों व्हील्स डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद आप दोनों को एक करके इंस्टॉल करके देख लेना जो भी इंस्टॉल हो जाए। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने
ये डाउनलोड किया व्हील, ये व्हील डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद ये जहाँ भी डाउनलोड हुआ है मैं शो इन फाइंडर करूँगा, यहाँ पर एक टर्मिनल खोल लूँगा, जहाँ भी सिंपली क्या करूँगा इसके व्हील को इंस्टॉल कर लूँगा और मैंने टी वाई के टैब दबा दिया, एंटर मारूंगा, ये व्हील इंस्टॉल हो जाएगा। ये वाला काम ना करे तो दूसरा वाला जो व्हील है वो आप ट्राई करना, काम कर जाएगा आप लोगों को। गाइस अगर आप पाइचाम को विंडोज में डाउनलोड करना चाहते हो तो प्रोसेस एक्जेक्टली सेम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद जिस तरह से मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, जो कि है हमारा एआई कैसे बनेगा, जार्विस कैसे सुनेगा, कैसे प्रोसेस करेगा इनपुट्स को, तो उन चीज़ों पर अब जल्दी से आ जाते हैं। अब हम जल्दी से स्पीच फंक्शन को लिखेंगे, जो कि सिंपली क्या करेगा, जो भी हम यहाँ पर इसको इनपुट देंगे वो ये बोलकर दिखाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इंपोर्ट ओएस करेंगे, ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, एक मैं यहाँ पर सिंपली फंक्शन बनाऊंगा और इसका नाम रखूंगा से, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा टेक्स्ट, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि ओएस डॉट सिस्टम को रन करेंगे, और एक एफ स्ट्रिंग बनाएंगे और कहेंगे कि भाई से कमांड को रन कर दो विद दिस टेक्स्ट। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ से हेलो आई एम जार्विस एआई, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा अपने इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पर ये कहेगा कि हेलो आई एम जार्विस एआई, ठीक है। Hello, I am Jarvis I. आई कह रहा है, मैं ए डॉट आई कर देता हूँ, शायद ये एआई ठीक से बोले। Hello, I am Jarvis AI. हाँ अब ये सही से बोल रहा है एआई, ठीक है। पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरा जो रिकॉर्डर है कंप्यूटर का शायद उसने रिकॉर्ड किया या नहीं, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये आवाज़ निकल रही है, हेलो आई एम जार्विस। वैसे है, ठीक है। गाइस अगर आप लोग सेव फंक्शन लिखना चाहते हो विंडोज में तो आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो Win32 कॉम डॉट क्लाइंट को। ये एग्जैक्ट कोड आप लोग को डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में कहीं ना कहीं दे दूंगा। अब यहाँ पर एक पैकेज हम लोग जल्दी से इंस्टॉल करेंगे, मैं सेटिंग्स पर आऊंगा और उसके बाद प्रोजेक्ट में दे दूंगा ऑर्डर। अब ये सही से बोल रहा है एआई, ठीक है। पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरा जो रिकॉर्डर है कंप्यूटर का शायद उसने रिकॉर्ड किया या नहीं, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये आवाज़ निकल रही है, हेलो आई एम जार्विस एआई, ठीक है। गाइस अगर आप लोग सेव फंक्शन लिखना चाहते हो विंडोज में तो आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो Win32 कॉम डॉट क्लाइंट को। ये एग्जैक्ट कोड आप लोग को डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में कहीं ना कहीं दे दूंगा। अब यहाँ पर एक पैकेज हम लोग जल्दी से इंस्टॉल करेंगे, मैं सेटिंग्स पर आऊंगा और उसके बाद प्रोजेक्ट में आऊंगा और इसके बाद प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर पे आऊंगा और PyWin32 हम लोग इंस्टॉल करेंगे। और ये पैकेज इंस्टॉल करने के बाद ये Win32 कॉम डॉट क्लाइंट वाला एरर चला जाएगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ इसके इंस्टॉल होने का, और ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करूंगा और मैं आप लोग को यहाँ पर इसका डेमो दिखा देता हूँ। Harry. Hey. Are you? तो यहाँ पर हाउ आर यू, ये सब चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ ये स्पीक करके मुझे दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से विंडोज में भी इसको बना सकते हो। अब यहाँ पर ये करने के बाद हमने यहाँ पर अपना जो सेव फंक्शन है वो बना लिया है। अब हमें करना क्या है, हमें आई कह रहा है, मैं ए डॉट आई कर देता हूँ, शायद ये एआई ठीक से बोले। Hello, I am Jarvis AI. हाँ अब ये सही से बोल रहा है एआई, ठीक है।
ठीक है, पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरा जो रिकॉर्डर है कंप्यूटर का शायद उसने रिकॉर्ड किया या नहीं, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये आवाज निकल रही है हेलो आई एम जारविस से, ठीक है। गाइस अगर आप लोग सेव फंक्शन लिखना चाहते हो विंडोज में तो आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो win32com.client को, ये एग्जैक्ट कोड आप लोग को डिस्क्रिप्शन में या Hello, Anand. This is your Jarvis AI.
Hello, Anand. This is your Jarvis AI. Hello, Anand. This is your Jarvis AI. Hello, Anand. This is your Jarvis AI. Hello, Anand. This is your Jarvis AI. Hello, Anand. This is your Jarvis AI speaking with Soundarya. Hello, Anand. This is your Shiro A.I.
Hello, Anand. This is your A.I. Hello, Anand. This is your Shiro A.I. Hello, Anand. This is your Shiro AI. 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 Hello, Anand. This is your Shiro AI.
Hello, Anand. This is your Shiro AI.「こんにちは、アナンド。これはあなたの白 AI です。ハロー、アナンド。This is your 白 AI。ハロー、アナンド。This is your 白 AI。ハロー、アナンド。This is your 白 AI。ハロー、アナンド。This is your 白 AI。ハロー、アナンド。This is your 白 AI。या फिर पिन कमेंट में कहीं ना कहीं दे दूंगा। अब यहाँ पर एक पैकेज हम लोग जल्दी से इंस्टॉल करेंगे। मैं सेटिंग्स पर आऊंगा और उसके बाद प्रोजेक्ट पर आऊंगा और इसके बाद प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर पे आऊंगा और PyWin32 हम लोग इंस्टॉल करेंगे और ये पैकेज इंस्टॉल करने के बाद ये Win32 कॉम का एरर चलेगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ इसके इंस्टॉल होने का और ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करूंगा और मैं आप लोग को यहाँ पर इसका डेमो दिखा देता हूँ। Harry. Hey. Are you? तो यहाँ पर हाउ आर यू, ये सब चीजें जो मैं लिख रहा हूँ ये स्पीक करके मुझे दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से विंडोज में भी इसको बना सकते हो। अब यहाँ पर ये करने के बाद हमने यहाँ पर अपना जो सेव फंक्शन है वो बना
बना लिया है। अब हमें करना क्या है, हमें माइक का इनपुट लेना है, यानी कि जो हम बोल Hello, Anand. This is your Ashiro AI. रहे हैं उसका इनपुट लेना है, और उसको लेने के लिए हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा और उसका नाम मैं रखूंगा टेक कमांड। ठीक है, तो टेक कमांड मैं यहाँ पर लिखूंगा और ये कमांड लेगा। क्या कमांड लेगा? ये हमारे माइक का कमांड लेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा r इज इक्वल टू एस आर डॉट रिकॉग्नाइजर। ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइजर नाम की क्लास है जो कि हमें हेल्प करती है। फिर मैं लिखूंगा विद एस आर डॉट माइक्रोफोन जो कि माइक्रोफोन क्लास है, इसको मैं लूंगा एज सोर्स। इसको सोर्स की तरह इस्तेमाल करते हुए हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो कुछ वेरिएबल्स को ट्वीक करेंगे। आप लोगों को बताऊंगा आप और भी वेरिएबल्स कैसे ट्वीक कर सकते हो, बट मैं अभी सिर्फ पॉज थ्रेशोल्ड को ट्वीक करूंगा और मैं इसको बंद कर दूंगा। पॉज थ्रेशोल्ड क्या होता है, कंट्रोल क्लिक करें, कोई भी छेड़खानी मत करना इस फाइल में। ठीक है, ये फाइल आ रही है साइड पैकेज से सीधा यहाँ पर हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, छेड़खानी मत करना कुछ भी इस फाइल से। ठीक है, टॉकिंग अबाउट छेड़खानी, मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि ये फाइल आप एडिट कर भी सकते हो। मेरे कहने का क्या मतलब है समझना, ये हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर है। अनदर रीजन टू यूज बिल्ट इन वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ पाइचार्म। आप अगर इसको चेंज भी करते हो तो ग्लोबल जो आपका इंस्टॉल है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप लोगों को काफी यूजफुल लग सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें हैं कि एनर्जी थ्रेशोल्ड, मिनिमम ऑडियो एनर्जी टू कंसीडर फॉर रिकॉर्डिंग। अगर कोई हल्का फुल्का बोल रहा है तो वो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आप इसको बढ़ा घटा भी सकते हो। डायनामिक एनर्जी थ्रेशोल्ड है, ये है। फिर इसके बाद देखो पॉज थ्रेशोल्ड है, लिखा हुआ ये क्या है। आप ऐसे ही जैसे कि मैंने यहाँ पर आर डॉट पॉज थ्रेशोल्ड को बंद किया, आप इसको चेंज कर सकते हो। आप प्रेस थ्रेशोल्ड को चेंज कर सकते हो, आप और भी बहुत सारी चीजें उनको ट्वीक कर सकते हो। लेकिन अभी हम उस तरह का कोई काम नहीं करने वाले हैं। अगर आपको करना हो तो आप आर डॉट करके कर सकते हो। कभी कभी माइक्स पर डिपेंड करता है, चीजें जो है वो कभी Hello, Anand. This is बिल्कुल your काम नहीं करती Ashiro है। ठीक है, तो AI. आपके माइक के लिए हो सकता है ये वेरिएबल चेंज करके काम करना शुरू कर जाए। ठीक है, फिर सिंपली मुझे कहना है ऑडियो इज इक्वल टू आर डॉट लिसन। आर डॉट लिसन, लिसन एक फंक्शन होता है जो कि हमारा जो सोर्स है कि एस आर डॉट माइक्रोफोन वो लेता है। तो मैंने लिख दिया ऑडियो इज इक्वल टू आर डॉट लिसन सोर्स। अब यहाँ पर क्या है, ये ऑडियो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे कि इस ऑडियो को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, लिखूंगा क्वेरी इज इक्वल टू आर डॉट रिकॉग्नाइज गूगल। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर इंजन है, रिकॉग्नाइज बिंग है, रिकॉग्नाइज अमेजॉन है, हम रिकॉग्नाइज गूगल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और हम इसको ऑडियो दे देंगे। ठीक है, तो हमने ऑडियो दिया इसको।
ऑडियो के बाद लैंग्वेज लेता है और मैं लैंग्वेज दे रहा हूँ EN-IN, ठीक है, इंग्लिश इंडिया, ठीक है। फिर इसके बाद यूजर ने जो भी बोला वो क्वेरी में आ जाएगा और मैं क्वेरी को रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ डिबगिंग पर्पस के लिए यहाँ पर लिख दूंगा कि जो क्वेरी है यूजर सेट और यहाँ पर क्वेरी, लेट्स सी कि यार ये काम भी करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा लिसनिंग, यानी कि सुना जा रहा है, और मैं यहाँ पर लिखूंगा r.a कमांड सॉरी r.a नहीं, सिर्फ टेक कमांड recognize टेक कमांड। और टेक कमांड क्या होगा, टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक कमांड, जो भी आप मुंह से बोलोगे वो टेक्स्ट के तौर पर रिटर्न हो जाएगा। और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक कमांड आपने कर लिया, इसके बाद आप सिंपली यहाँ पर से टेक्स्ट कर दें, ठीक है। सॉरी से नहीं है हमारे फंक्शन का नाम, से है क्या, हाँ से ही है, ठीक है, गुड। से टेक्स्ट, लेट्स रन इट। हेलो, आई एम जार्विस AI। हे जार्विस हाउ आर यू, इसको मैं ओके करूंगा, हे जार्विस हाउ आर यू, नन। और इसने ओके कर लूंगा अभी यहाँ पर जो है ये कर दिया। अच्छा से फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसने नन बोला, से फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये नन क्यों बोला इसने, मुझे देखना पड़ेगा। से टेक्स्ट, टेक्स्ट नन है, टेक कमांड ओके गॉट इट। हमें रिटर्न करना है यार क्वेरी को, हमें रिटर्न करना है क्वेरी को, तो हमें क्योंकि रिटर्न करना है क्वेरी को, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ये लिख दिया। आई एम स्कैर्ड कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को और सेम माइक में यूज़ कर रहा हूँ, कोई सेटिंग ऐसी ना बिगड़ जाए जिससे वीडियो खराब हो जाए। आई होप कि ऐसा ना हो, अगर आप सक्सेसफुली देख रहे हैं तो ऐसा नहीं हुआ होगा, एक बार अगर हुआ होगा तो मैं आगे बता दूंगा वीडियो में हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। बट थोड़ा सा रिस्की रहता है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा सा मेरा खराब है इन चीज़ों में। सेम माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं पाइथन के थ्रू और सेम माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने OBS के थ्रू। एनीवेज कोई बात नहीं, अभी हम पॉजिटिव रहते हुए इसको दोबारा रन करेंगे। हेलो, आई एम जार्विस AI। हाय जार्विस हाउ आर यू, हाय जार्विस हाउ आर यू। ठीक है। तो ये रिपीट कर रहा है, रिपीट करे जा रहा है, एंड ऑब्वियसली यू डोंट वांट दैट, आप रिपीट नहीं करवाना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर व्हाइल ट्रू करता हूँ ताकि Hello, Anand. This is your Shiro AI. हेलो, हाँ अच्छा, घरी इकडं भावशिंगपुरा. कुठे आहे तुम्ही आता? ठीक आहे, साई मेडिकलला येतो. हां, मला 10 मिनटं लागेल मग, म्हणजे निघालं. हां हां.